Hello friends, welcome back to my YouTube channel Toppers World. In today's video, I'm going to talk about IELTS reading. What planning, what strategies we must follow before the exam that we can score maximum scores, like we can get a high band score in reading. Friends, most of the students afraid in reading because their performance do not go up. उनकी परफॉर्मेंस ऊपर नहीं जाती. They get stuck at 5.5 5 band. But if you watch this video till end, I give you guarantee that if you follow my strategies and my planning that I'm going to share with you, you will definitely score 6.5, 7 or 7.5 band, a very high band score you can achieve. Whether you are academic student or whether you are general training student, it doesn't matter at all. So क्या करना है आपको, what you have to do in IELTS exam time. So first thing is, which is very important, that is you should stay cool throughout your reading test. You should be focused, concentrated, and don't bother about what is happening in the hall, what the examiners are doing, what other students are doing. आपने अपने टारगेट पे, अपने एम पे फोकस करना है. यू शुड एंटायरली फोकस ऑन योर क्वेश्चन पेपर, ऑन योर क्वेश्चंस एंड आंसर्स. सो दिस इज द इजी थिंग. यू से आई ऑलरेडी नो दिस. ओके, वी ऑलरेडी नो दैट, बट स्टिल we get nervous when we get the question paper. So the first thing, focus on your paper. And now I'm going to share with you a strategy for getting 7 band in IELTS reading. And what is that? The first one is, the first strategy that I'm going to share with you is like how to start your reading. So when you get your reading paper, then what you need to do, you will get first of all 3 passages and select any passage very quickly without wasting any time. Some students, what they do, they keep on searching whether I should start from first passage, second or third. पहले से शुरू करूँ, दूसरे से या तीसरे से. तो they waste 4-5 minutes in deciding this. But you should not do this. आपने कोई भी passage, let's for example we take passage 1. This is the easiest, and I advise my students that they should always start their reading from the passage 1. And what is happening in the passage 1, you see, you will get around 8 blanks and 5 true false not given. This is happening nowadays, and I have seen that in many papers from last couple of months. What is happening, most of the students get 8 blanks and 5 true false not given in the first passage. तो आपने कोई टाइम वेस्ट किए बिना, you should start from the blanks. और blanks को find out करने का तरीका क्या होता है, how we can find blanks in reading. I just tell you that there are 2 types of blanks. One is summary blank and one are simply gaps. So first passage is not summary blanks. There you have to find out the right suitable word from the passage and fill in the blank. For example, this is your blank. Okay, so here you will see you have to focus. आपने यहाँ पे focus करना है कि what word is there and what word is here. Okay, these 2 keywords you have to find in the passage. They may not be exactly the same. There might be some synonyms or some parallel wording would be there. वो सेम नहीं होंगे, वहाँ पे कुछ ना कुछ पर्यायवाची और any other kind of word would be there. So you have to focus on these 2 words. Where you find these 2 words, there will be the answer. Okay, that answer you should fill over here. And if you have an, or the here, anything like that, these articles will help you to find out the exact word in the passage. तो रीडिंग में जब ब्लैंक्स करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द लोकेशन. तो लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए वी नीड कीवर्ड्स लाइक डेट और नेम और एनी प्रॉपर नाउन. दिस विल हेल्प यू टू फाइंड द लोकेशन कि आपके आंसर कहाँ पे हैं. सो once you have find the location, after that you should focus on finding the suitable word. So blanks are very important in reading, and in these days, even the last exam that took place
a couple of days ago. In that there were 18 blanks. Okay, suppose you get 18 blanks, it's a wonderful thing for you. It's a very beneficial thing for you, क्योंकि blanks are easy to do. And if after that the blanks which are having which are from the summary type, okay, summary type questions, these blanks for you will be given a separate box and the words would be there. You have to choose the words from the box. तो आपने बॉक्स में से वर्ड चूज़ करना है और वहाँ पे आपको क्या करना है कि वो जो वर्ड्स होंगे बॉक्स में दिए गए, द वर्ड्स दैट आर गिवन इन द बॉक्स, दे विल बी synonyms ऑफ द वर्ड्स दैट विल बी इन द पैसेज. और समटाइम्स वो वर्ड एग्जैक्टली वैसे नहीं होते जो आपने डायरेक्टली फिल करने पड़ेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आई जस्ट टेक वन एग्जाम्पल ओवर हियर कि वर्ड कैसा हो सकता है, विच टाइप ऑफ वर्ड कुड बी देयर एंड हाउ यू हैव टू चेंज और मॉडिफाई दैट. फॉर एग्जाम्पल, in the blank, in the summary box, in the box the word is discovered. Okay, the same word in the passage would be could be like that, invented, okay, or innovated. So this will be related to discovered. So you have to find out that which word relates to the words that are given in box. आपको जो बॉक्स में वर्ड्स दिए गए हैं उनके साथ कौन सा वर्ड रिलेट करता है. अगर ये आपको फाइंड करना आता है, इफ़ यू नो हाउ टू डू दैट, तो योर आंसर विल बी करेक्ट. समटाइम्स क्या होता है कि जो पैसेज में वर्ड दिया गया होता है दैट इज़ इन फॉर्म ऑफ वर्ब, वो वर्ब है. फॉर एग्जाम्पल डिस्कवर, एंड इन द box there would be invention. So discover is a verb, invention is a noun. So you have to take care of these things while doing blanks. उसके बाद after that we have true, false, not given type, or yes, no, not given type of questions. These both type of questions are easy to do because the answer is in the paragraph. You need not to use your own knowledge here. What the information is given, you have to find the answer out of that information. So आपने खुद से कुछ भी इसमें नहीं सोचना, आपने उसको जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके बारे में ही. कई बार क्या होता है कि हमारा जो प्रीवियस नॉलेज है, आवर प्रीवियस नॉलेज, वी यूज़ दैट एंड वी मेक द आंसर समटाइम्स रॉन्ग. इन ट्रू, फॉल्स, नॉट गिवन टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो टिप क्या है इसमें, कैसे करना है इसको हैंडल. सो टिप इज़ दैट in true, false, not given type, you should read 2 or 3 question statements in advance. And if you are not able to get the answer of the first question and you get the answer of the second or third question, it means that the first question is not given, or even second can be not given if you directly find the answer of the third question. अगर आपको तीसरे का जवाब पहले मिल जाता है और पहले 2 का नहीं मिलता, इसका मतलब है पहले 2 ज़्यादातर चांसेस होंगे कि वो नॉट गिवन होगा. और आप उसमें ये भी देखें कि अगर क्वेश्चन में कंपैरिजन दिया गया है, मोर देन, लेसर देन, बिगर देन, ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है, तो ये ज़्यादातर, आई एम नॉट सेइंग 100%, ज़्यादातर ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर आपको नॉट गिवन में मिलेंगे. और जो स्टेटमेंट्स में एवरीबडी, ऑल, एवरीवन, ऑलवेज, फॉरएवर, फ्रीक्वेंटली और मोस्टली, तो यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से इन वर्ड्स को आपने पैसेज में मैच करके देखना है कि वहाँ पे मोस्टली कहा गया था का ऑलवेज कहा गया. वहाँ पे ऑल, क्वेश्चन में अगर ऑल है तो स्टेटमेंट में भी, पैसेज में भी वो सारी चीज़ सभी पे रिलेट करती बताई गई है कि एवरीबडी इज़ गेटिंग अफेक्टेड बाय पोल्यूशन और ओनली फ्यू पीपल गेट इन्फेक्टेड बाय द पोल्यूशन. तो फ्यू, लिटल, too little, all, they are very very decisive words in true, false and not given, and you have to take care of these words. Mostly यहाँ पे यही words statement को जहाँ तो true बनाएंगे और या they will make it false. So इसको आपने ध्यान में रखना है वहाँ पे आपने इस तरह के questions को करते हुए. So next जो मैं बात करने वाला हूँ, the next kind of question is researchers. रिसर्चर्स को कैसे मैच करना होता है. रिसर्चर्स एंड रिसर्चर्स A, B, C, D, और वी हैव देयर स्टेटमेंट्स. ओके,
so sometimes what is there, statements are few and researchers are more, like 5-6 researchers are there, and the matching statements with them are just 4. So such kind of questions are bit tricky to do. So the trick is that here, the what tip that I am going to share with you here, go through the passage, quickly underline the names of the researchers or scientists wherever you find. जहाँ पे भी आपको मिलते हैं उनके name, you just underline them. Okay, after that what you have to do, quickly go through the statements that are given by these scientists. उनको एक बार read करें, they might be 4 or 5. Read करने के बाद, after reading them, what you have to do, where you have underlined the names of the researchers, go there. तो रिसर्चर के नाम से पहले जो 2-3 लाइनें और उसके नाम के बाद 2-3 लाइनों को पढ़े. समटाइम्स क्या होता है कि जो रिसर्चर ने बात की होती है वो पहले बता देते हैं और उसका नाम बाद में देते हैं, या कई बार उसका नाम पहले आ जाता है और उसके ने जो बात की है वो बाद में आती है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रीड इट 2-3 लाइन्स बिफोर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट एंड 2-3 लाइन्स आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट. After that, if the name of the scientist, suppose the name is Richard, and Richard name is there 3-4 times in the passage, then it is a bit problematic for you, because आपको फिर वो चारों बार you have to read at all these 3 or 4 places where the same name is mentioned. So instead of, you should do other questions like you find the names of other scientists or researchers and match their statements with their names. उनको पहले कर लें जो एक बार में ही दिए गए हैं वहाँ पे रिसर्चर्स के नेम. तो ये क्वेश्चन करने के बाद मैं बात करूँगा लिस्ट ऑफ हेडिंग्स. सो गाइस, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स जो हैं, आई सजेस्ट कि आप अगर इनको लास्ट में करें तो ज़्यादा बढ़िया होता है. इफ़ यू डोंट गेट द टाइम, यू कैन इवन अटेम्प्ट लिस्ट ऑफ हेडिंग्स बिट इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. तो लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, यूजली ये 5-6 लिस्ट ऑफ हेडिंग्स आते हैं और यू हैव टू मैच दैम विद द पैराग्राफ्स. सो द टेक्निक इज़ दैट कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को पढ़ना है. 6, 7, 8 वट एवर 6, 7, 8 हेडिंग्स आर गिवन टू यू, एंड रीड दैम डीपली विद अंडरस्टैंडिंग कि ये क्या बात कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल द हेडिंग लाइक डेफिनेशन ऑफ टफन ग्लास or manufacturing of toughen glass, or that can be increasing costs of making toughen glass, how toughen glass is different from other kind of glasses, uses of toughen glass. So ये headings जो होते हैं ना, the headings are they show us the meaning. वो हमें खुद ही बताते हैं which paragraph they would be related to. Okay, so it's very important that we should read them 2-3 times and understand. After that, we read the first para A, read it 2-3 lines first and 2-3 lines in the end. If you able to get any idea, अगर उसमें 2-3 लाइनों में आइडिया मिल जाता है कि this is about uses of toughen glass, so आपका आंसर वहीं पे हो गया. अगर आपको 2-3 लाइनों में नहीं मिल रहा, पहली में भी और लास्ट में भी, then you have to read in between. तो जल्दी से इन्फॉर्मेशन को स्कैन करना है. यूजेस में आपको, जैसे कि यूजेस ऑफ टफन ग्लास, तो वहाँ पे पहले में क्या बताया होगा, हाउ कैन वी यूज़ टफन ग्लास लाइक इन विंडोज़, इन डिज़ाइनिंग और इन मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ हाउस होल्ड आइटम्स. तो ऐसे पता लग जाएगा, यू विल बी एबल टू नो दैट दिस पैराग्राफ इज टॉकिंग अबाउट यूजेस. ओके, जो डेफिनेशंस होते हैं, मीनिंग, डेफिनेशन, दे आर ऑलवेज इन द फर्स्ट पैराग्राफ. फर्स्ट पैराग्राफ हमेशा आपको डेफिनेशन या मीनिंग बता रहा होता है. राइटर स्टेटमेंट और राइटर्स पर्सनल ओपिनियन, राइटर क्या सोचता है इसके बारे में, दैट इज 100% इन द लास्ट पैराग्राफ. लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स ऑफ एनी टेक्नोलॉजी, कोई भी टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ यूजिंग पेस्टिसाइड्स. तो द पैसेज में क्या होगा कि फ्यूचर में बात की गई होगी कि आने वाले 30 सालों में, 20 सालों में हाउ इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट आवर लाइव्स. तो यहाँ पे फ्यूचर की बात 10-20 साल आगे की बात की है, तो दैट पैराग्राफ विल बी रिलेटेड टू दिस हेडिंग. सो यू हैव टू सी दीज थिंग्स. कुछ पैराग्राफ्स में कंपैरिजंस होते हैं. अगर आपको हाउ टफन ग्लास इज डिफरेंट फ्रॉम अदर काइंड ऑफ ग्लासेस, तो डेफिनेटली आपने वो पैराग्राफ ढूंढना है जिसमें बहुत सारे ग्लासेस की बात की है और आपस को कंपैरिजन, लाइक दे आर चीपर इन कॉस्ट,
they have more uses, they are better in use, they are long lasting. तो in this way comparisons would be given. तो आपने उस पैसेज को उसके साथ आपने रिलेट कर देना है. तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं दैट यू कैन डू इजीली. कुछ पैराग्राफ में साफ पता लग रहा होता है यहाँ पे फिगर्स हैं, डेटा है, तो वो जो पैराग्राफ होते हैं वो जहाँ तो उनकी कॉस्ट को बता रहे होते हैं, ओके, या एक्सपेंसेस को बता रहे होते हैं, या अर्निंग्स को बता रहे होते हैं. तो हेडिंग में देखिए कि आपको मॉनेटरी फिगर्स कहाँ पे चाहिए. वेयर यू नीड टू हैव मॉनेटरी फिगर्स लाइक इंक्रीजिंग कॉस्ट्स, earnings from the any use of technology, increasing benefits, monetary benefits. So in this way वहाँ पे आपको figures मिल जाएंगी, तो that can be easily located. So some of the headings that you can easily find without making any hard work, but you should be able to locate and search them, then it's very easy. So after the list of heading there might be other questions like which paragraph contains the following information. तो इसको कैसे करेंगे आप, विच पैराग्राफ, ये तो मुझे बहुत मुश्किल लगता है खुद भी. विच पैराग्राफ कंटेन्स, बट आई एम एबल टू डू कंटेन्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. ओके, तो आजकल क्या हो रहा है इन दीज डेज कि आपको 3 सेंटेंसेस देते हैं जो आपने ढूंढना है कि ये कौन से पैराग्राफ में दिए हैं. Usually in these days there are 3 sentences and you have to find out in which paragraph, or they are in first 3 or 4 paragraphs. वो 3-4 पैराग्राफ में ही होते हैं. You need not to search all the paragraphs. तो पहले जो रीडिंग्स हुआ करती थी जैसे बुक नंबर 7-8 में क्या होता था कि 3 sentences are there और 8 paragraphs which is very very time consuming. तो मैं तो इनको छोड़ दिया करता था. अगर आपको भी ऐसा लगता है कि यू हैव मोर नंबर ऑफ पैराग्राफ्स, 7-8 पैराग्राफ हैं और 3 इन्फॉर्मेशन आपने उनमें से ढूंढनी है, तो इट्स क्वाइट टाइम वेस्टिंग. इनको छोड़ के आप पहले दूसरे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर लीजिए. तो यहाँ पे ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं यूजली दे आइदर बी इन द सेकंड पैसेज और इन द थर्ड पैसेज. सपोज दे आर इन द थर्ड पैसेज, ओके, तो यू शुड लीव देम एंड गो टू ब्लैंक्स. थर्ड पैसेज में भी आजकल 7-8 ब्लैंक्स आर देयर एंड यू कैन ईजिली हैप्पीली डू दैट. Okay, in case these are in the second passage and you should do other questions first like true false or researchers and their findings, or you can do summary first, and when you do other questions you will get the ideas about the location of these question sentences. वो कौन से पैराग्राफ में थोड़ा आपको आइडिया मिल जाएगा and you can do that. But I advise you that do not spend more time on such kind of questions. क्या होगा अगर आप एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढ भी लेते हैं ठीक, और you have spent 5, 6, 7 minutes on finding, then you are entirely out of the game. So आपको कुछ questions को sacrifice भी करना आना चाहिए. You should know how to sacrifice few questions, ignore them because they are bloody time wasting questions. और इसके बाद जो questions हैं जो और भी दिमाग ख़राब कर सकते हैं स्टूडेंट्स का, they are MCQs. MCQ. So how to handle these MCQs? अगर आपको 3 या 4 MCQs आ जाते हैं पेपर में, if you get 3 or 4 MCQs and that are in last passage, so I advise you that you do MCQs in the end and you do other questions before MCQs. और आपने ब्लैंक्स कर ली, आपने ट्रू फॉल्स भी कर लिए, एंड स्टिल यू हैव 4 MCQs लेफ्ट विद यू एंड यू आर आल्सो हैविंग टाइम 5-6 minutes. So here I tell you that you should use technique of true false not given type. जैसे true false में आप ढूंढते हैं, ऐसी टेक्निक आप MCQs में भी लगाएं. तो MCQ का क्वेश्चन पढ़ें आप, read the question, okay, but do not read the options here. Read the questions, find out the keywords there, okay, and after that quickly scan the page of the reading passage and find the location. वहाँ पे आपको आंसर मिलेगा, उसको रीड करें, read the answer over there or information over there, then come back to the question and there are 4 option A, B, C, D. आप information को मैच करिए. Does this match with D? No. Does this match with A? No. Does it match with C? No. तो now you are left with B. After that B के साथ मैच करने की जरूरत नहीं है, just write it there because in this way you will save your time. So this is the best method to do that. One is false, that may be not given and this may be true, matching with the statement. तो 3-4 options हैं.
2 फॉल्स होंगी, 1 नॉट गिवन होगा और 1 के साथ वो आपका आंसर मैच कर जाएगा। तो इन दिस वे यू विल बी एबल टू डू योर MCQ टाइप क्वेश्चंस। अगर आपके पास एंड में 2-3 मिनट बचते हैं, इफ़ यू आर एबल टू सेव 2-3 मिनट्स इन द एंड, देन क्विकली गो थ्रू योर आंसर शीट एंड चेक इट आउट दैट कि आपने आंसर सही तरीके से दिए। हैव यू गिवन द आंसर इन राइट वे। आपका कोई आंसर ऐसे तो नहीं है कि आपने 5th में लिखना था और 6 में लिख गए। चेक इट आउट दैट हैव यू रिटन ऑल योर आंसर्स एट करेक्ट प्लेस विद करेक्ट नंबर. If there is any mismatch, then the things could be drastic, because you are not going to get a separate time. Examiner will not give you separate time to transfer the answers. तो आपने answer immediately side by side, you have to transfer the answer on the answer sheet and write the answers clearly, boldly enough. Don't write T for true, F for false. Write full word true, 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 FALSE, false. A same case with yes, no, not given. And the last thing, I again love to advise you that stay cool, calm and focused. Don't bother about the result of your test. Do not get panic if you get few tough questions or and you're not able to find the answer. Leave them, go next. 40 questions are there, you need only 23 to get eligibility like 6 band, but you should strive for more. You can get 7 band if you follow my advice that I have shared with you. Thank you for watching this video. I hope that you will get your dream band score. Thank you.